Hello everyone, how are you all? I'm talking to the 12th class board aspirants. How are you all? How is the preparation going on? दिन नजदीक आ रहे हैं, टाइम थोड़ा ही रह गया है. जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, the things that are coming closer to you must be anxiety and stress. So here we are to reduce that stress and anxiety up to certain level. हम उसको downgrade करने वाले हैं. कैसे? इंग्लिश को सिंप्लीफाई कर कर. You must have given all your energies to your medical studies, to your non-medical studies, commerce and arts. All the streams are really equally difficult and equally demanding. So I am going to teach you, as you can see on the screens beside me, English. I will be taking up the textual study of both books, Flamingo and Vistas, chapter wise, poem wise, story wise, highlighting the key themes, key plot, key words, and also the bonus here, key tips and tricks, how to improvise your score and what kind of vocabulary you must use, you should use in attempting your paper so that you can catch the attention of the examiner. हम सब करने वाले हैं इस YouTube platform पर. First of all, who am I? I am Dr. Neha, a doctorate in English literature with the expertise and experience of good 11 years of teaching both at school at college level. So as the board exams are approaching soon, worry not, we are going to begin with My Mother at 66, written by Kamala Das. Kamala Das has written the poem My Mother at 66, one of the easiest poems to start a preparation with and to end first chapter and to end first poem in a very easy way so that you can retain the complete story and word by word understanding को हम इस platform पर promote करने वाले हैं. So without much ado, let us get into the video. So, My Mother at 66, as the title of it suggests, is about a mother who has reached the age of 66. 66 is a major age. It's nearly old age. So, इस age पर जब एक mother रीच कर जाती है, इस एज तक पहुंच जाती है, शी इज नेचुरली एजेड, naturally old and naturally very much vain, colorless, pale. अब ये words मैंने कहाँ से लिए हैं? I have taken all these words from your poem itself, from the book that is there in front of you. The first tip here is we will use the words in our answer directly taken from the poem itself. Let us start. My Mother at 66 कमला दास ने लिखी है. स्पेलिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट नोट कर लीजिए, कमाला दास, KAMALA, नॉट कमला, कमाला दास. इट्स KAMALA, कमाला दास. ये एक मलयालम शॉर्ट स्टोरी राइटर है जो कि एक इंडियन पोएट की तरह जानी जाती है. इनकी पोएट बहुत ज्यादा कन्फेशनल है. शी कन्फेसेस अ लॉट हर इनर इमोशंस, इनर फीलिंग्स दैट कम आउट थ्रू हर पोएट्री. ये एक इंडियन पोएट है. इनका सेकंड नेम रहा है माधवी कुट्टी, लेकिन पॉपुलरली इंडियन लिटरेचर में हम इन्हें कमाला दास की तरह जानते हैं, जो कि एक इंडियन इंग्लिश पोएट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखा है My Mother at 66. Second thing, as you can see in the book right in front of you, the poem is a one big sentence. पोम में पैराग्राफ का स्पेस नहीं है, पैराफ्रेजिंग नहीं किया गया है, पैराग्राफ में डिवाइड नहीं किया गया है. इस पोम को एक सेंटेंस की तरह लिखा गया है टू कन्वे द कनेक्टिविटी ऑफ इमोशंस. द पोएट इज लुकिंग एट हर मदर, हाउ ओल्ड इज शी, एंड शी हैज दिस फीलिंग डाउन इन हर हार्ट दैट शी माइट लूज हर मदर एनी डे. द पोएम इज वेरी ब्यूटिफुल, very beautifully expressed by Kamala Das. Let us read with me. Driving from my parents' home, from my parents' home to Cochin last Friday morning,
यहाँ पोएट अपनी मदर के साथ, शी इज ड्राइविंग, बोथ ऑफ देम, मदर एंड डॉटर आर इन car. They are driving to Cochin. Last Friday morning, I saw my mother beside me. As my mother, here Kamala Das is, as I have said, she's a confessional poet. तो यहाँ पर she is confessing her deep rooted fear, जो हर child को होता है, चाहे वो son हो या daughter हो, that they just cannot accept the fact that their mother, especially their mother, the birth giver, the person whom they first saw when they came into this life, are aged and old now, and they might go up to heaven one day. So that acceptance itself is very dreadful. Same with Kamala Das, as she was driving with her from her parents' home to Cochin last Friday morning. This lady, Kamala Das, saw my mother. My hair is the poet, my Mary, then my parents. तो यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन पोएट्री लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, नैरेटिव पोएम है, एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, दैट हाउ व्हेन शी वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, आई सॉ माय मदर हु वाज सिटिंग बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथेड. अब दीज आर द टू वर्ड्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पेपर में एज सच यूज कर कर आएंगे टू recognize and to express that her mother was aged now. So she was dozed, her mouth was open, she was dozing off. As you must have seen your grandparents at home, they doze off. वो सो जाते हैं, किसी भी वक्त सो जाते हैं. They are sitting upright and they are sleeping at the same time. You cannot tell whether they are mentally or physically present here or not. They are just dozing off, their mouth is open, they are taking breath, but at the same time they are sleeping. So first word जो मेरे students use करेंगे doze. Second word open mouthed. So when she saw her mother, she looked at her mother. Her mother was dozed, open mouthed, her face ashen like that of a corpse. Her face was dull. इनफ डल, इतना डल था उनका फेस जैसे एक डेड बॉडी का होता है. सो यहाँ पर जो रियलाइजेशन हो रहा है, जो थॉट्स प्रोसेस हो रहे हैं कि अरे माय मदर इज ओल्ड नाउ एंड आई माइट लूज हर एनी डे, शी इज एज नियर, she is like a corpse now, she is dozed, she is open minded, open mouthed, and she is physically present here. But as I look at her age, I think she is not going to live much now. Dozed, open mouthed, her face ashen, dull, very dull, lifeless, ashen like that of a corpse, and realized with pain. As I saw my mother, my heart was filled with pain. The realization was painful, with pain that she was as old as she looked. सच में मेरी मदर अब ओल्ड हो चुकी हैं. ये हर चाइल्ड के साथ होता है when they see their parents going through some sort of pain or even the natural process of growing up or aging up. Children feel that fear because they had been our protectors, they had always been our side, like supporters and like rock, they have always been there. But now because they are losing their senses, physical senses, feeling of presence they are losing, that is why the heart of the poet is filled with realization first and secondly with immense पेन. अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इमेंस, जो वर्ड्स मेरे स्टूडेंट्स यूज करेंगे. हर हार्ट इज फिल्ड विद immense pain, the pain that cannot be expressed in words. Her heart is filled with immense pain that she was as old as she looked. अब कितने words हमने किए? Doze, open mouthed and immense. Now come to the later section.
But soon, as both of them are sitting in one single car, she's looking at her mother and realizing that she has got old. And at the same time, she, with a click, she changes her thought and starts to look outside. वो बाहर देखने लगती है in order to drift away from the thought of losing her mother. Like how? See. But soon put that thought away. जैसे ही मैंने ये सोचा that my mother is like a corpse and I might lose her any day, she shoots and gives away that thought. But soon put that thought away from my mind. Thought away and look, it's a very descriptive poem written in one single sentence, as you can see. Looked out at young trees. Now you can see the comparison. In the car, there is old age that is dominant, age that is dominant, and outside she is looking at the trees that are young, looking at the kids who are young. So she wants to go back to that age when she was young, when her mother was young, and those young times. So there is this constant comparison between what is outside the car and what is inside the car. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. हम आगे की ओर जा रहे हैं, trees पीछे की ओर जा रहे हैं. क्या कहते हैं, हम एज में आगे की ओर जा रहे हैं और trees पीछे जा रहे हैं. That means our young age is going back and we are moving forward towards the old age. एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है. सेकेंड इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, द कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रास्ट comparison between young age and old age. In order to put that thought away, she is looking at the young trees, she is looking at the young children who are playing outside. The merry children spilling out of their homes. Children are happy, they are young, they are playing outside their house. But after airport security check, जैसे कि हम एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पर हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ मेरा, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं अपनी मदर से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी. आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनको देखा. मेरे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वैन एंड पेल. शी वॉज कलरलेस, शी वॉज पेल. फेस पर कोई रौनक नहीं थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं था. शी वॉज doubtless that her mother is now very aged. She might meet her, might not meet her when she will return to her maternal house. So here the point is, her mother has been compared to a corpse. Her face was ashen like that of a corpse, and there is a comparison between the young age and old age. Young trees, Y has been capitalized to keep the emphasis upon the word young. Sprinting, young merry children spilling out of their homes, but after airport security check standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale. She was colorless, she was pale. Students word use करने वाले हैं, बिल्कुल use करेंगे जो हमने prior किया है. वो word भी क्या था, doze, open mouthed. Second, wan, pale, immense. As a late winter's moon, when I stood few yards away from my mother, I looked at her again. She was dull. Winter का moon क्या होता है? Fog होता है, जिसकी वजह से you might not see the moon very clearly because the sky is not always clear. It's full of fog, and as a result of which moon is very dull. तो यहाँ पर उसने अपनी mother को पहले ashen like that of a corpse, and second comparison is a late winter's moon. Moon clearly visible नहीं होता है due to fog. So as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. A question might pop up कि what are the expressions that Kamala Das, the poet, has made in order to express that her mother is aged, her mother is aging, or her mother is at 66. मेरे students क्या words use करने वाले हैं? When, pale, उसके साथ doze, open mouthed, ashen like that of a corpse, and last लेट विंटर्स मून. ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो मदर की एक्सट्रीम ओल्ड एज को
कैटेगराइज, रिकॉग्नाइज करती हैं। और एज इट इज वर्ड्स मेरे स्टूडेंट्स यूज कर कर आएंगे। And felt that old familiar ache, my childhood fear। जैसे ही मैंने अपनी मदर को देखा, मेरे माइंड में एक ओल्ड फेमिलियर एक, जिसकी वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बात की है। चिल्ड्रन ऑलवेज लाइक टू क्लिंज विद देयर मदर्स। उन्हें अपने मदर के साथ रहना ही अच्छा लगता है। फॉर अ टाइम, फॉर फ्यू मिनट्स, इवन देयर मदर गेट्स अवे, even to some nearby place, they have this question pop up in their mind that where is my mother? They keep on asking, where is my mother, where is my mother? Because that's the first bond that starts up even when they take their first ब्रेथ, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपकी भी मदर कहती होंगी आई विल गो अवे, योर हार्ट मस्ट हैव सैंक। बच्चों का दिल बैठ जाता है कि हमारी मदर कहाँ चली गई है। सेम हमारी कन्फेशनल पोएट कमाला दास के साथ हो रहा है। वो कहती हैं कि ये मेरा चाइल्डहुड फियर था कि मेरी मदर मुझसे दूर चली जाएगी, बट ऑल आई सेड वाज शी buried that thought in her very heart and mind and said this thing, all I said was with optimism। अब वो यहाँ पर पॉजिटिव है, होपफुल है। she says see you soon अम्मा, मैं फिर से मिलूंगी, आपसे जल्द ही मिलूंगी। but deep in her heart, in the hearts of her heart, she is aware she might not be able to। all I did was smile and smile and smile। क्या लिटरेरी टेक्निक है? रेपिटेशन की। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, सिमिली एज अ लेट विंटर्स मून, सिमिली डिटेल में बात करेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन मैंने क्या किया? आई कॉन्टिन्यू टू स्माइल। पहला स्माइल रियलाइजेशन का है, आयरॉनिकल है, आयरॉनिकल है, मन में जानती है। रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन। फर्स्ट स्माइल इज ऑफ realization, second smile is of acceptance, and third smile is of hope, hope that she will be able to meet her mother once again। she will come back to her maternal house to meet her mother once again। that's all about the text of this poem। now I would like to highlight two fundamental factors here। लिटरेरी टेक्निक पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोम केवल एक स्टोरी नहीं होती है, पोम में लिटरेरी टेक्निक्स, लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए जाते हैं टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ दैट पोम। वो क्लियरली कह सकती थी कि मेरा चाइल्डहुड फियर था दैट आई माइट लूज माय मदर एनी डे, बट उन्होंने कॉर्प्स वर्ड का यूज किया है, उन्होंने विंटर्स मून का किया है। तो ये क्यों किया है? लिटरेरी डिवाइस टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ दैट poem or the content or the idea। so two literary techniques are majorly employed in this poem। literary technique को मेरे बच्चे literary devices भी बोलेंगे, हम poetic devices भी बोलेंगे। यहाँ पर imagery, imagery क्या है? you can see each and everything going on in front of you। आप देख सकते हैं, trees पीछे हुए जाते देख सकते हैं, mother का face imagine कर सकते हैं, late winters moon imagine कर सकते हैं। so imagery right here is in front of you। and second is simile। simile is when you compare two dissimilar images with the use of as and like। आप two dissimilar चीजों को कंपेयर करते हैं as and like का यूज कर कर, तो उसे हम simile कहते हैं। जैसे कि यहां पर किया गया है as a late winter's moon, यहां पर किया गया है she open-mouthed ashen like that of a corpse। so as and like, the words are used to compare and contrast mother with moon and mother with a corpse। so with that I come to the end of this video। hope you liked the way I teach। हमने यहाँ पर बहुत important words को highlight किया है। एक नया word मैंने introduce किया है, immense पेन। वर्ड को यूज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों को थ्रू एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। एक क्लेनलीनेस हमें पेपर पर, एक सेंट्रल आइडिया, एक क्लियर आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए,
उसकी भी बात हम करेंगे। बट फॉर टुडे दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद आप एक बार खुद इस फॉर्म को गो थ्रू कीजिएगा। वर्ड्स मत भूलिएगा जिन्हें आज मैंने हाईलाइट किया है। एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर कर अपने एग्जाम पेपर पर लिख कर आइएगा। इम्प्रोवाइजेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग दिखेगी एग्जामिनर को कि बच्चे ने टेक्सचुअल स्टडी किया है। Till the time we meet next, I wish you all the very best for your preparation that you are doing day and night. Have a nice day.